Stop buying crap and start investing, guys. ये फालतू चीजें खरीदना बंद करो, कंज्यूमरिज्म वाली, और पैसे इन्वेस्ट करना सीखो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। सीरियसली, जितनी जल्दी लाइफ में करना है कर दो, नहीं तो आप लोग अमीर नहीं हो सकते अनलेस आपके पापा ऑलरेडी अमीर हैं, या आई डोंट नो, इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट फॉर मोस्ट पीपल हु कमिंग हियर, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास, you know, and they, I can tell you one thing: if you don't invest, you're not going to get rich. I mean, maybe you'll get that crazy job, or maybe some exceptions की बातें मत करो मुझसे. But for most normal people, you need to start investing. But people keep buying crap. Really, latest iPhone चाहिए, you know, jeans चाहिए, शॉपिंग चल रही है, लड़कियां लड़के दोनों लगे हुए हैं, like ऐसे शॉपिंग, वो 5,000 की ड्रेस 3,000 में मिल रही है, आई एम बाइंग इट, आई एम सेविंग सो मच मनी. नो ड्यूड, नो. आप 5,000 की ड्रेस 3,000 में खरीदते हो तो आप 2,000 रुपए बचा नहीं रहे हो, आप 3,000 रुपए खर्च हो. आई मीन इट्स कॉमन सेंस, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आती. एंड आई एम गोइंग टू शो यू टुडे कि व्हाट दिस मींस, बिकॉज़ लॉट ऑफ, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर हमने 300 रुपए की कॉफी पी ली, तो यार जिंदगी में छोटे छोटे सुख हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हमने एक अच्छा फोन ले लिया तो, एंड क्या फर्क पड़ता है अगर हमने थोड़ी शॉपिंग की, right? Now, my videos are for investment, and these kind of things are partnered with small case. As you know, I selectively choose my partners if they have to be relevant and beneficial to my channel. Small case is an app which is helps you invest money, which I'm going to explain it a little more, because I'm not going to assume कि सबको सब कुछ पता है, but it is an app. Just let me just share this. I'll come back to this whole thing of how young generation keeps buying crap in a bit. काफी मेरे को गुस्सा है उस बात पे, but let me just show you. This is a small case app, and if you go to your you know, Play Store on your phone, you can get this app, Small Case Invest SIP in stock portfolios. I will tell you what this is in a bit, but let me for now, you know, like just get back in. How do I? Yeah, I'll just stop this share now. Okay, तो बात ये है कि yeah, people just find crap, man. People just like the money. जिसे कहते हैं ना, पैसे की इज्जत ही नहीं है. This is all thinking. Like, people are ready to buy handbags which are crazy expensive. People are ready to. People definitely want that phone, or accessories related to the phone, or branded stuff, and sneakers, and not 3,000 rupees sneakers, 10,000 rupees sneakers, 20,000. Like, देखो, पैसा खर्चने की कोई लिमिट नहीं है. इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं. These are companies that their job is to make products that and try to sell them to you, right? I mean, that's what they are doing, and they hire smart people. अच्छे अच्छे लोग हायर करते हैं कि भाई इनको बेचो, इनके अंदर एक तमन्ना जगाओ, ये चीज तुमको चाहिए. अगर स्टारबक्स में 400 रुपए की कॉफी नहीं पी, तो क्या किया तुमने लाइफ, है ना? You know the cost of coffee in Starbucks? You can Google it. The actual cost of coffee. You know, अगर आप 400 रुपए की कॉफी लेते हो तो how much does it cost Starbucks for the coffee? जो चीज आपके पेट के अंदर जा रही है उसकी क्या कॉस्ट है? Probably not even 20 rupees. Yeah. But that 380 rupees you give because Starbucks के ग्लास के साथ एक लगानी है ना Insta पे स्टोरी, और that latest iPhone or things like that. And ये कल्चर बन गया यूथ में कि you know, I must have these gadgets and I must show my lifestyle to show people that I'm cool. And it is utter crap. Absolute nonsense. You need to realize यार कि लाइफ क्या है. आई मीन रियलाइज कि तुम ये सब चीजें क्यों खरीदना चाहते हो, मजे करने के लिए, और इज इट टू शो ऑफ, और इज इट बिकॉज आप अंदर से, आपका अपना सेल्फ एस्टीम, आपका जो अपना जजमेंट है कि मैं कौन हूं अंदर से, इतना अच्छा नहीं है, तो आप दुनिया को दिखाने के लिए रैपिंग पेपर ढूंढ रहे हो, ये कपड़े, ये स्नीकर्स, ये फोन,
ये Starbucks के cup. I mean, nothing against Starbucks, guys. It's nice if you can afford it easily. It's no big deal. I like the coffee. Yeah, I mean, some of the things I'm going to talk about, some of the brands I'm going to talk about, I like those brands, but I like them today. Aaj, if I can afford them, it's fine. Still, I don't go crazy. But it's not about me. I'm talking about you guys. कि ये जो कल्चर बना हुआ है टू स्पेंड एंड टू कंज्यूम इज द न्यू कूल. आई एम कंज्यूमिंग. I'm going to expensive restaurants. I'm going to buy expensive clothes. I want an expensive car. I want that bike. I want these material things. It's going to make you poor. How is it going to make you poor? I'm just earning. Like some of you might say, I can afford, I can earn. And मेरी salary है 50,000 रुपीज मेरी salary है 20,000 खर्चा है. तो 30,000 है मैं उड़ा सकता हूँ. Well, I mean, that's one way to think about life, but it's a very stupid way to think about life. Because this salary is never going to be there, and this salary means you have to work morning to night, all weekdays, sometimes weekends also. And don't you want some freedom? Don't you want some security? Don't you want options in life to do something different? You want to be like a rat on that treadmill? जो एक होता है ना, एक चूहा भागे जा रहा है, नौकरी करो, पैसे लाओ, खर्चो उड़ाओ, मेहनत करो. ये जीवन है. डोंट यू वांट टू बी फ्री वन डे कि आपको ऑफिस जाना ही ना पड़े? तो वो ऐसे तो नहीं होगा. वो होगा इन्वेस्टमेंट से. बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ वे यू योर मनी मेक्स मनी फॉर यू. इन्वेस्टिंग इज अ वे कि जब आप रात मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. इफ यू हैव सम मनी व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड, दैट्स लाइक योर चाइल्ड which is going out there and trying to make money for you without you having to do anything. Money is the only thing like that. It is accumulative. It accumulates. आपने एक पैसा किया उसको और एंड कंपाउंड्स इवन मोर. ये सब ना बातें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हो जाती है. स्पेशली आई वांट टू शो यू जो चीजें आज आपको कूल लगती हैं दे मे नॉट बी सो कूल आफ्टर सो मेनी इयर्स. बट व्हाट इज कूल इज दैट अ फैट बैंक बैलेंस यार. अच्छे पैसे जेब में हो ना, ऑप्शंस की कल को बॉस ने मेरे को तंग किया मैं छोड़ दूं नौकरी, वो कूल है. I'll show you example. I'll show you. Okay, let me just share the screen again. Okay, so I'm going to show you. Suppose करो आप this is the small case screen again. I'll show you this later, right? I will get back to this. Like I said, they are partners, and when we get to the solution of how to invest, I will show you that. But अभी आपको दिखाता हूँ what this is. Let us go back to 2011, around 10 years back, right? 10 years back. ओए होए लेटेस्ट फोन आ गया इंडिया में. इमेजिन दैट एरा. iPhone 4S. आज आपने किसी के हाथ में iPhone 4S देखा ना, बोलेंगे ये कौन से जमाने से आया. तो उस टाइम पे iPhone 4S, क्या मार्केटिंग थी, क्या लुक थी. छोटा सा फोन था, छोटा सा 16 GB मेमोरी वाला. मेमोरी नॉट रैम. 16 GB मेमोरी. आज सबको 256 चाहिए या पता नहीं कितनी 500 चाहिए. एक एक टेराबाइट वाले भी आ रहे हैं फोन. ओके, सो दिस इज द फोन, राइट? And let me just show you, this was launched at a price of 44,500 rupees in India. That was the price of the phone, right? Okay. And at that time, some of, if you have the same mentality ki, you know कमाना है और खर्चना है, and I must have this phone, I must look cool. Because अगर आप iPhone 4 लेके 4S, जो I know आज सिली लगता है, iPhone 4S लेके आप कहीं जाओगे, then you will look so cool in a restaurant. तो 44,500 rupees खर्च दो यार. EMI पे ले लो. EMI पे लेते थे लोग phone. Now I'll tell you what else you could have done. Supposing you didn't take this phone 44,500 का, and you put that money in the stock market. I'm gonna. So this is what have I done here? This screen is Nifty 10 years. Okay. So this is what I just put on Google Nifty 10 years. Okay. So this gives me the chart, and then I can see this chart here. ये आज का date है, and you can this is the max
over here, so I can go from say 2011 की बात हो रही थी ना, yeah, something like that. So let's see, say July 2011 to today. So it was 5,000 and it went up 11,900 to be at 17,200 today. So 5,000 पे था निफ्टी, ये दिखा हुआ है 4,900 on May 12th. So like yeah, I go to 11, 5,000 something, September 11, 5,040. You can see on the screen. Today it's 17,000. देख रहे हो? So you know if you have 45,000 का phone, if 50,000 is 5,000 is 17,000, then for 10% come is 45. Okay, so 10% less of 17,000 today is what, like 15,000. तो मतलब वो 45,000 रुपए का अगर आपने निफ्टी खरीद लिया होता, this is a basket of all stocks, every like it's a, not all stock but 50 assortment of stocks representing all sectors. Okay, you would have had 1.5 lakhs today. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, निफ्टी में डालना था और आईफोन ना लेते वो 4S. टेल मी द प्राइस ऑफ दैट 4S टुडे. एक्सचेंज ऑफर में 2000 मतलब क्या मिलेगा उसका? तो अगर अब तक चल रहा है तो अभी तक उसकी बैटरी अगर सलामत है तो, राइट? सो यू नो दिस इज द पॉइंट. If you look back and come today, think about the coolness that 4S had that day. Think about the lack of coolness कि आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. Think about that money put in Nifty and think about 1.5 lakhs in the bank today. Just one phone. Just one phone. What ends up happening is if you have this habit, it is never going to stop at one phone. Every month you need a few things which are cooler, which are more expensive, which you can't afford. So if you had several such purchases, which would have cost you 4-5 lakhs, you are talking of 15-20 lakhs that could have been there with you today. 20 lakhs की आपके पास बैंक में है. If you do it over 10 years, every year you did something, you could have much more, 50 lakhs. I don't know, who knows? But okay, let's just go to one phone. 45,000 ka phone, which is almost worthless today, versus 1.5 lakhs you have. 1.5 lakhs is how much? Well, you can move to a city like Bangalore, Pune, Gurgaon, and you can get a one-bedroom apartment for 15,000 rupees rent in a decent locality, decent flat. 10 months of rent, and then you can look for a job there. If you didn't buy that amazing, super cool phone, you can literally move. Even if you chalo, at least 6 months you can live in a city and look for a job with khana, pina, sab kuch, 6 mahine. And then once you get a job, I mean, just think of that one phone, what that could have done. But you didn't do. Now you might say कि यार फोन तो चाहिए सर, आपने कह दिया फोन नहीं है, फिर मेरे पास फोन ना होता, फोन तो बड़ा यूजफुल है. ओके ओके, आप 15,000 का फोन ले लेते, तब 15,000 का आपको डिसेंट फोन मिल जाता. You would have got a decent phone for 15,000 rupees, right? You would have got it. But what would you do? You would save 30,000. और वो 30,000, चलो अगर 45,000 का 1.5 लाख हो गया है, तो वो 30,000 का भी 1 लाख प्लस हो गया होता ना आपके पास. आपके 15,000 का फोन तब लिया होता और आपके पास उस फोन की भी वैल्यू नहीं होती. आज 15,000 की भी कोई इतने पुराने 10 साल पुराने फोन की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए होता है. नाउ इफ यू स्मार्टली डिड योर खर्चास, हर बड़ा खर्चा या और कोई भी खर्चा करने से पहले अगर आप ऐसे सोचते और ऐसे अगर आप बचाने लग जाते, तो आज आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते. सोचो, आप अमीर होते, आपको माना जाता है ये बड़ा समझदार है यार, इसके पास तो पैसे हैं. और पता है फिर लोग आपको क्या बोलते हैं, यार तेरे पास तो ऑप्शन है, तेरे पास तो ऑप्शन है, तूने पैसे बचाए हुए हैं, तू अपनी जॉब छोड़ सकता है राइटर बनने के लिए. अरे यार मैंने तुम्हें मना किया? तुम्हारी भी नौकरी थी, मेरी भी नौकरी थी, तुम उड़ा रहे थे, तुम्हें बड़े बड़े अपार्टमेंट चाहिए थे, तुम्हें व्यू चाहिए था, तुमने किराया ज्यादा देना था, तुम्हें गाड़ियां खरीदनी थी, तुम्हें ये सब करना था. मेरे को नहीं खरीदना था, मेरे को बचा के इन्वेस्ट करना था ताकि एक दिन मैं ये छोड़ सकूं, राइट?
तो आप बताओ आपको क्या बनना है? एंड इट्स इजी नाउ, इट्स इजी नाउ to invest in the stock market. It's not that difficult. I'll tell you how. Let us say first you change the mindset. कि I'm not going to buy crap. I'm going to buy things which I need, yes, but I'm not. जिस दिन ये आ गया ना, मेरे को शो ऑफ नहीं करना. मेरा कॉफी पीने का मन है, मैं ले लूंगा यार. You can take a Nescafe. Okay, I agree. Nescafe, Starbucks taste cannot be compared. I'm also choosy that way. You get these. You know what I have these days at home? I have this again. This brand has not told me to put it, but I'm just telling you. I have this ID ka filter coffee, which is a lot more expensive than Nescafe, but it says 70 rupees ka there's a like a liquid that comes, and I mean makes me 7, 8, maybe even 10 cups of coffee. So 6, 7 rupees versus 200, 300, 400 rupees at these, Costa Coffee, Starbucks type place. Plus it's convenient and it's filter coffee. It's very good South Indian filter coffee. So ये मैं कर सकता हूँ. Now I don't even need to do it today. I'm not trying to show off or anything, but I'm saying I've reached a stage in life where I can have that coffee if I want, but I still like doing that because that's just my habit. I don't want to, I'll occasionally कभी कभी ले लूंगा Starbucks, but ऐसा नहीं कि रोज लेना है, you know. And more importantly, when I was your age, my spending patterns were very different. Most of you are like whatever 18, 20, 25. I was in college then. चाय वाले पे उधार चलता था मेरा एंड वो कहता था भैया ला के देता हूँ आपको. I'd be really careful. कहाँ खाना है, कब खाना है. बाहर जाते थे लोग खाने में कोई ज्यादा कैंपस में अहमदाबाद में एंड आई वुड गो वंस वीक बिकॉज बाकी टाइम मेस का खाना है और मेस का बिल दिया हुआ है पूरे महीने का और somebody I have paid for that. Yeah, okay, it's not so much fun but it's fine. So I'm just saying कि मैं ऐसे नहीं जीता था कि लेटेस्ट जूते पहन के और क्लास जाना है. इट्स ओके, मेरी अपनी औकात है अंदर से, मेरे को पता है और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. तो अगर आपको कंपेयर करना ही है मुझसे तो तब का करो. या ऑफ कोर्स आई लाइक एन आईफोन टुडे. I like it because I can get it without compromising my finances and without compromising my future. Even then, I'm not super crazy in my lifestyle. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि start investing. How do you invest? You invest in the stock market. You're like, I don't know the stock market. I don't know. I'm not a finance guy. ये सब इतने सारे गुरुज आते रहते हैं. इतने मैं कोई हर्षद मेहता नहीं. Firstly, Arshad Mehta was a scammer. Great series, Scam 1992. But that's not what it means to be. You just need to invest. Now, you may not know individual companies. So, that's where my partner small case comes in, which I'm going to tell you कि क्या करते हैं. बाकी आप खुद भी देखना. So, I'm going to go to the screen share again, right? I showed you. This is small case, right? इसका ऐप फोन पे आप डाल लो और उसके साथ खेल लेना बाद में, क्योंकि मैं जितना भी आपको दिखा दूँ, आप जब तक आप खेलोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा क्या है. तो ये जैसे प्ले स्टोर में आप जाके ये ऐप आएगा, तो आप ये ले लेना. एंड yes, if you have an iPhone, it'll be in the App Store. Fine, it's not big difference. Play Store, ये वो, right? Anyway, so if what is small case? Small case is a basket of stocks. मतलब अगर आपके पास 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने को या 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को या आपके पास महीने के 20,000 रुपए आप कर सकते हो इन्वेस्ट, जिसे SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. और आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी कंपनी का करूं, आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के इतना आपको कंपनी का एनालिसिस नहीं पता, लेकिन आपको सेक्टर का पता है. आपको लग रहा है कि कुछ सेक्टर्स अच्छे हैं, इंडिया के कोई सेक्टर अच्छे हैं, आपको रिटेल सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको ट्रैवल सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको इलेक्ट्रिक कार का सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको इंडिया का इंटरनेट का सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो स्मॉल केस पकड़ लो, वो टोकरी पकड़ लो जिसमें वो स्टॉक्स हैं. तो अगर मैंने क्लिक किया ये, इफ यू नोटिस आई जस्ट क्लिक्ड ऑन डिस्कवर स्मॉल केसेस, you can come here and you can go to a lot of them like popular investment strategies. These are dividend aristocrats. Some people like dividends, some stocks that pay dividends. Some people like growth and income. you know some people like say hand-picked PSU gems, मतलब पब्लिक सेक्टर कई लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना है. You can invest those. you know you can keep exploring all these various small cases, right? I mean, you can see the top gainers in the last year. अगर आप लास्ट ईयर करते तो कौन सा अच्छा था. सो these are some of the resilient pack. some resilient pack I think means names जो अगर रिसेशन भी आएगा इंडिया में तो वो कंपनियां बुरा नहीं करेंगी.
right? So you can do that. And transporting India, for example, let's just click on transporting India. So this is transporting India, which basically is कि इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर 15% पे ग्रो कर रहा है। अब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सड़कें बन रही हैं, तो 15% पे ग्रो कर रहा है। सो देन you can bet on these companies, which you'll have to create a login to see कि इस small case में companies हैं कौन सी. So that's why it's not showing. It is showing you 51,000 rupees minimum investment. और अगर 50,000 रुपए हैं तो आप एक small case transportation इंडिया का खरीद सकते हो, right? ओवरव्यू में ही अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडिया ने 5 साल में अगर आपने 100 रुपए डाले होते तो इंसेप्शन से, सॉरी, from 2014 it would be 374 rupees today, compared to equity small cap, which is just a benchmark, की 343 rupees होते हैं. Now you can make the app and start investing. ये भी नहीं है कि भाई सर हमने फोन नहीं लिया अब हम करें क्या इसका. You can just, like I said, move the money instead of an online shopping site to an investment site, guys. How to open this? I'm going to put the link in the description, in the pinned comment below. You can get it, and you can that begin your journey, yaar. Start investing, yaar. Ideally तो हर महीने which I call SIP, but ठीक है, कई लोग हर महीने नहीं करते. Some people say कि depending on your work and spending pattern, you can say, some call it SIP is the monthly strategy. I sometimes call it maybe like the sweep strategy. हर 3 महीने में जितना इकट्ठा हो गया पोचा मार के वो सारा डाल दिया, फिर अगले 3 महीने तो वो अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है, किसी 3 महीने ज्यादा खर्चे हो गए, किसी दिन कम हो गए. बट ये सब तभी होगा जब आप बेसिकली अपनी मेंटालिटी चेंज करोगे कि मुझे दिखावे वाली चीजें नहीं खरीदनी, फालतू पैसे वाली चीजें नहीं खरीदनी. जो इंडिया में कहते हैं ना बनिया बुद्धि, मारवाड़ी बुद्धि, ये हमारी कम्युनिटीज हैं जो समझती हैं पैसे को, वो लानी पड़ती है. मैं नहीं हूँ, आई एम पंजाबी, बट आई हैड टू लर्न. when I in fact I learned in Ahmedabad when I stayed in Gujarat. Although I went to IIM Ahmedabad, I often say this कि मैं गुजराती कल्चर से ज्यादा सीखा हूँ पैसे के बारे में जितना मैंने एमबीए में नहीं सीखा. मतलब मैं वहां गोलगप्पे वाले से भी डिस्कस करता था और वो कैसे अपना बिजनेस के बारे में सोचते हैं. उनकी थिंकिंग बहुत अलग है. एनी गुजराती पीपल हियर, प्लीज गिव कमेंट्स बिलो. Why do youngsters buy such expensive things when they don't have any money in the bank? Why? बैंक में 25,000 रुपए हैं लेकिन 20,000 की प्लानिंग है शॉपिंग की. व्हाट इज दिस? नो वेल्थ क्रिएशन, नथिंग. ये साइकोलॉजी आप मुझे बताओ. I honestly want to know. Please put in the comments below, why do youngsters spend like this? No sense of saving, no sense of future. Second, change it. Stop spending on crap things. Start investing. Play around with the small case app. See if you have. There's no compulsion. It's fine. But yeah, it's at least helping you save and invest money rather than buy a phone today, which 10 years later will be worth nothing. यहाँ 10 years में ट्रिपल हो रहे हैं पैसे, कहीं डबल भी हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग ट्रिपल होंगे, गारंटी तो ऑब्वियसली नहीं है, रिस्क है, स्टॉक मार्केट है, वो सब अलग बात है वो. बट हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो, पैसे बनेंगे ना. हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो, अगर आपने रोज 400 रुपए की कॉफियां पी रहे हो और फालतू जूते खरीद रहे हो तो उनकी क्या वैल्यू है. सो गाइस, आई वांट ऑन दिस चैनल फॉर यू टू बी बेटर, हैव अ ग्रेट लाइफ, एंड दैट वोंट हैपन जब तक आप सेविंग्स नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे. So that's why I regularly make these investment videos also. And yeah, stop buying crap, start investing. Thank you for watching. Do like, subscribe, share. It helps engagement, it helps YouTube algorithms. So that's why I ask you to do it. Thank you so much. Take care.